أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. So, Assalamu alaikum everybody. This is Dr. Haroon. I'm approaching you on behalf of Organizing Committee of Pakistan Orthopedic Association Orthocon 2020 and as a president of Pakistan Society for Surgery of Hand. We decided to conduct this webinar in the current pandemic scenario. The death toll escalating day by day and very scary nowadays. I'm sure all of you are taking adequate precaution, social distancing to keep you protected from this bad disease. And at the same time, we do not want to discontinue or disconnect ourselves from each other. So this is an attempt to keep ourselves connected as well as to continue our mission of education. So today's webinar will mainly focus on the common compressive neuropathies, which will be like around the thoracic outlet and elbow and then wrist. So I request all of you to please Lahore with his first presentation. Dr. Khalid, please. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Thank you, Dr. Haroon Rashid, Dr. Zia, and all my colleagues for inviting me for this lecture, to the administration people who provided us the opportunity to make an interaction for this academic session. Dr. Haroon Rashid told some common neuropathies, but the topic given to me is not very common. However, I will try to put my effort as possible
to make you understand regarding this rare condition that is basically thoracic outlet syndrome. Bismillahir Rahmanir Rahim. There are certain realities about thoracic outlet syndrome. Treatment of peripheral nerve compression in the upper extremity is one of the main components of hand surgeons' practice. However, most of them shy away from treatment of thoracic outlet syndrome. As far as surgery is concerned, surgery should be performed immediately if a patient presents with distal muscle atrophy or acute ischemia due to arterial occlusion. Thoracic outlet decompression is also recommended if a patient fails to respond to conservative measures. This includes following procedures. And these procedures have certain approaches. And generally, these are performed through suprascapular approach, infrascapular approach, transaxillary approach, and deltopectoral approach. And these procedures, the most important procedure is the anterior and middle scalenectomy. Because the causes decompression, it results generally the decompression of the thoracic outlets, and there is involvement of the scalene muscles. So when performing anterior scalenectomy, the most important structure to keep in mind is the phrenic nerve. It has to be identified and preserved, and 80% of the muscle has to be excised. The long thoracic nerve is also prone to injury because it may run through the middle scalene muscle. Only when the long thoracic nerve is identified and retracted may the surgeon proceed to middle scalenectomy. Only 30 to 50% of the middle scalene muscle should be excised. And the next step is neurolysis. Freeing of the nerves and excision of the loose muscle fibers and connective tissue bands and scalene minimus muscle should be performed if it is present. And the next procedure is the resection of the first rib. Some investigators support the opinion that the scalenectomy alone will suffice for treatment, as a resection of the first rib is associated with higher morbidity and longer recovery period. But literature shows better results if both procedures are performed with associated to each other. So the surgical treatment here is to focus around the removal of the external venous, as far as management of the venous thoracic outlet syndrome is concerned. The surgical treatment here is focused around the removal of the external venous compression, and it should be decompressed, and restoring the patent venous lumen. Restoring the venous flow can be accomplished by thrombolysis and thrombectomy, depending on the site and size of thrombosis. Regarding venous decompression, this is achieved by scalenectomy and first rib resection, and which should be performed only after successful thrombolysis and thrombectomy. As far as management of arterial thoracic outlet syndrome is concerned, the surgical treatment includes the decompression first, and decompression is usually achieved by performing the above mentioned procedure like anterior and middle scalenectomy and first rib resection, or scalenectomy plus first rib resection. However, in addition, the artery is frequently replaced with the saphenous vein graft or prosthetic material, as the artery is often non-salvageable in such cases. And the next
is the sympathectomy. Sympathectomy is currently an infrequently performed operation because of poor outcome and it is performed only when there is poor outcome in the first few years after surgery. So this is the algorithm. One can have a view this algorithm that the arterial, venous and neurogenic, the arterial type history, the most important history is the finger and hand ischemia. And the physical one, on physical examination, one can see the reduced or absent pulse. The diagnostic test is the angiogram, X-ray, and X-rays. And one can see the thrombus and aneurysm on arteriogram. And treatment is the repair and resect the rib. As far as venous is concerned, the history shows swelling and cyanosis of the pain, and physical examination shows distended veins. And diagnostic tests include the venogram or venous pressure, which shows increased venous pressure. And treatment includes, in acute cases, anticoagulation, lysis, and thrombectomy, and in chronic cases, repair, bypass, and decompression. And similarly, in neurogenic cases, you see the history. History is the paresthesia around the and pain, hand pain, paresthesia around the neck. And physically, it is confirmed by the Roos test. And as far as diagnosis is concerned, diagnostic tests include EMG, NCS, and other radiographic tests. And treatment is generally the conservative treatment. And if patient improves, then one don't need anything more. But if fails, then definitely one have to consider the surgery. There are certain complications of the surgery, including the apical hematoma, pneumothorax, injury to the subclavian artery, injury to subclavian vein, postoperative subclavian vein thrombosis, and injury to the brachial plexus, and injury to the long thoracic nerve, injury to the phrenic nerve, injury to the intercostal brachial nerve, inadequate resection, and injury to the thoracic duct as well. There is a definite role of post-operative rehabilitation. It starts a gentle range of motion in the first post-operative day, and it should be associated with adequate pain control. That helps increase in the range of motion and decrease possibility of the brachial plexus tethering to scar tissue. And one must continue conservative modalities of the treatment as necessary as possible. As far as outcome is concerned, it should be noted that clinical improvement in subjective is a subjective parameter. It is not easy to compare outcome results in the literature because authors use different grading system and assessment measures. However, in general, supraclavicular scalenectomy without first rib resection yields approximately 70% clinical improvement of patient symptoms, whereas combined surgical procedure yields higher than 80% improvement. It is also worth noting that work-related injuries are associated with higher treatment failure rates than road traffic accidents. The main issue of this management is the recurrent TOS. The long-term results show that recurrence of symptoms may develop in 15 to 20% of the patients who undergo surgery, and 80% of the recurrences seen are within the first 2 years post-operatively. Common causes of treatment failure include contracture formation of the scar and scalenotomy performed instead of scalenectomy, and retention of posterior first rib stump. How one can deal with the recurrent TOS? There are certain corrective procedures that include removal of the remaining posterior portion of the rib and external neurolysis of the brachial plexus, scalenectomy, excision of 80 to 90% of the middle scalene muscle if primary procedure was scalenotomy, and then it can be associated with the sympathectomy in patient with sympathetic overactivity. So in conclusion,
Careful attention to detail about the patient history and physical examination is the key to diagnosis of TOS. And the patients who demonstrate vascular and electrically positive neurogenic TOS should be considered early on for surgery or referred for operative consultation. For those without obvious vascular compromise or electrical findings, conservative treatment can be successful in controlling the symptoms in most patients. And selected patients having failed conservative treatment may warrant surgical decompression. The treatment is best handled by hand or upper extremity surgeon who has thorough understanding and knowledge about thoracic outlet syndrome. Thank you very much. Thank you, Khalid Saab. Yeah, is there any question to Khalid Masood Saab? Any question, please? Khalid Saab, how common is this problem in your practice? This problem is not very common. Generally, we consider in our practice when we see any obvious reason, particularly if the patient present with cervical rib or there are definitive things. You can see that as far I'm talking about the surgery, the cases of surgery, and these patients are very few. Yes, there are frequent patients who present in our outpatient department where nerve conduction studies or electrodiagnostic studies, mostly in those cases, these are negative. And generally all these cases, they respond very well to the conservative treatment and physiotherapy. And as far as surgery is concerned, I think that we have performed surgery in 4 or 5 patients who showed failed conservative treatment. And among them, there was one case who still was having issues with those. And probably these cases are those who have cervical issues as well with them. So it is really a difficult issue to deal with. However, if we find definitive reason and definitive causes, etiological causes, then there is great role of surgery in such patients, and they are very much comfortable after surgery. But these patients who have definitive etiological causes are very few. Thank you, Khalid Saab. Any other question? सर Yes. जी बोले। सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी सर, क्या ये स्लाइड्स जो आपने अभी दिखाई वो शेयर हो सकती हैं हमारे साथ? जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी, इसी लिंक से पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। श्योर। कोई क्वेश्चन है? सर एडसन्स टेस्ट एक बार रिपीट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये जो अभी स्क्रीन पर ये एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है, क्या इसका लिंक सेंड हो सकता है? जी बिल्कुल होगा जी, जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिली है सारी मिल जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर एक कर्नल खालिद साहब से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर सर अवेलेबल हैं अभी? जी बिल्कुल पूछिए। अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है न्यूरोजेनिक थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम के साथ और मतलब उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स के तकरीबन 3 से 4 साल के बाद वो प्रेजेंट करता है, जिसमें वो वेस्टिंग ऑफ हैंड मसल्स के साथ आता है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर अगर हम फर्स्ट रिब एक्सेशन करते हैं तो हम इस पेशेंट के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जो हैंड मसल्स की वेस्टिंग हो चुकी है वो तो हम वहां पर उस वक्त उसमें एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर फर्स्ट क्या ऐसे पेशेंट्स को में रेकमेंडेड है सर्जरी करना? और अगर सर्जरी करें फर्स्ट रिब एक्सेशन, लेट्स सपोज कि हम अगर इसको सर्जरी ऑफर करते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करें और क्या
पेशेंट को काउंसल करें कि ये इम्प्रूवमेंट आपको सर्जरी के बाद मिलेगी, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स पेन डेफिनेटली इनके अंदर पेन होता है और न्यूरोजेनिक जो थोरेसिक आउटलेट की प्रेजेंटेशंस है वो सारी चीजें इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो एक्सपेक्ट क्या करें ऐसे पेशेंट के, और क्या ट्रीटमेंट इनको ऑफर करें, सर्जिकल ट्रीटमेंट? हाँ, ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है सर्जरी की ना। तो पेशेंट जो आपके पास मोटर सिम्टम के साथ आ रहा है और वो तो नजर आ रहा है ना कि जी, और फिर आपको रिब भी मिल गई है, तो बेशक वो 3 से 4 साल के बाद आया है, तो वो उसकी डिजीज की प्रोग्रेस को तो रोकेगा ना एटलीस्ट। और फिर ये है कि जी उसका पेन काफी हद तक बेहतर हो जाएगा, और पेन ज्यादा इशू है, बाकी तो रिकवरी उसकी विद फिजियो और एक्सरसाइजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाएगी। For patient who present with the neurological symptoms, with muscle wastage or clear-cut etiological factor, you can see is a strong indication for surgery. One must do for that. Right, sir. And sir, one more question. Through this transaxillary approach, when we are going, when we are excising the first rib, how much should be the first rib excised? मतलब कितना एडिक्वेट एक्सेशन करनी चाहिए जो एडिक्वेट हो? कोई ऐसा चीज मेंशन है सर? हाँ, इसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं, मैक्सिमम कहते हैं कि जी अप टू 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक आप छोड़ सकते हैं, बाकी निकाल दें। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी। Dr. Haroon, Dr. Khalid, Dr. Zal Islam, colleagues, seniors, residents, Assalamu alaikum. As you know that carpal tunnel and Gyan's canal syndrome, these are the two commonest compression neuropathies around the wrist joint. And I thought that I will take only these two, although very rarely there is a compression of radial nerve also around the wrist, which we call Wartenberg syndrome, but that is a compression of only subcutaneous branch, and it's one of the rare entity hardly seen by people. So I will actually confine my talk to the carpal tunnel syndrome. It is the most common compression neuropathy, and I thought my presentation will comprise of few things. That I will start with the definition, epidemiology, anatomy of carpal canal, etiology, pathophysiology, then symptoms, diagnosis, and the treatment, and most of we are actually dealing with kind of this common compression neuropathy. And few facts about histological background. We know that it was first described by the Sir James Paget in 1865. And since then, it has been the commonest compression neuropathy. Although it is attributed to a repeated and sustained activities and which repetitive trauma, which can result in a partial or complete loss of a sensory, motor, or autonomic condition. And for the last 3-4 decades, once this industrialization started, it has been recognized in the industry workers also. And then the efforts they were underway, especially in the European countries and the North America, that they thought that they need to opt certain measures to reduce work overload, and especially they have to modify certain way of their jobs so that they can actually reduce the trauma, repetitive trauma during their work activities to reduce the incidence of a carpal tunnel syndrome. But it has been actually reported in many people who are working in various professional activities. So it is a well-known and most frequent compression neuropathy, as all of you know. And we know that it is caused by an increased pressure within a non-flexible carpal tunnel, which is limited from back and from the side by the bones, and interiorly by a thick fibrous band, which people they call it the flexor retinaculum, or they also call it transverse carpal ligament. This evidence that shows that most of the time there is an increased pressure within that canal, which leads to a compression of a microcirculation of a nerve and leading to signs and symptoms of a carpal tunnel syndrome. Now, if we talk about, say, epidemiology, it is almost in the 3.8% of the general public population, but most of data is from the European and the American.
and almost every 1 in 5 subjects who actually present with a pain, numbness in the hand, most of these people, they are diagnosed based on clinical examination and EMG nerve conduction studies to have a carpal tunnel syndrome. We know that the idiopathic carpal tunnel syndrome is the most commonest. Some people, they have actually described that the incidence rate, it can go up to 276 cases per 1 lakh per year. And we know that there's a prevalence has been higher in the female as compared to the male, and bilateral disease is quite common with a peak age range of 40 to 60. Prevalence of CTS in the UK alone is 16%. It's a much higher than a 5% prevalence in the US. Now, in the Western countries, that increase reports, especially in work-related musculoskeletal, as I previously mentioned, that it is because of erectile strain and biomechanical overload. Some industries, especially fish processing, they have reported a higher incidence among the workers, quite high, up to 73%. And an increase in the number of carpal tunnel patients in the general population is actually on the rise also. And people, they have observed that its incidence is increasing, especially in a diabetic people. Either they have a neuropathy or they do not have a neuropathy. Without neuropathy, it's a 14%, and with neuropathy element, it is a 30%. Although we have seen in a diabetic patient, the element of a neuropathy is less in the upper extremity as compared to the lower extremity. A few facts about its anatomy. We know that it is a thick fibrous band. It is covering a curve inferiorly on the ulnar side. We know that the attachment is to the piriform bone and to the hooka femur. And on the radial side, this attachment is to this transverse carpal ligament to the hooka femur and the tubercle of trapezium. It is attached. And this thick band, people, they have also divided into different 3 zones. We know that the whole carpal canal, which actually starts from the distal palmar crease. Proximal palmar crease, we know that it is a flexion crease of your wrist joint. From the distal palmar crease, it extends almost to the carpometacarpal joint, to the base of carpometacarpal joint. And this is a quite thick band. People, they have divided into different 3 zones. Zone 1 is a thin, which is a continuous with the antebrachial fascia at this level, and from here fibrosis starts. And then the middle zone is a thick band between, we see this is between the piriform bone and the tubercle of scaphoid, and the distal one is lower down, which actually becomes continuous with the palmar epineal. So we know that what are the contents of this carpal tunnel. Basically, there are 10 structures. One is median nerve along with its central feeding artery, which is being augmented from the radial and ulnar artery and the inferior and posterior artery throughout its pathway. Then we know that there are 9 flexor tendons, 4 of tendon of the superficialis, and 1 is that of the flexor pollicis longus, and 4 tendon thereof. Now, if you look at the dimension of this carpal tunnel, as carpal tunnel starts from the level of a distal radius, it is a little wider, and as it moves distally, it becomes narrower, and its dimension also actually changes. So this is the proximal area, and as you go distally, it becomes much more rounded, and its diameter also changes. Initially, its diameter is almost 25 millimeter, and as you go distally, diameter becomes almost 20 at the level of hooka femur, which is the narrowest portion, and most of the time, compression of a median nerve is found at that particular. Now, one most important structure is the palmar cutaneous branch. As we know that this palmar cutaneous branch, it arises from the median nerve as it emerges underneath the surface of flexor digitorum superficialis. Now, as in between FCR tendon and underneath surface of FDS, this palmar cutaneous branch emerges, and it runs in between these 2 tendons on the radial side, and then it pierces at almost a centimeter, or people they say exactly 0.8 centimeter from this flexion crease, the antebrachial fascia, and it enters toward the thinner eminence, and then it divided into the radial and the ulnar branches. Sometimes there are 2 definitive branches, sometimes there are more definitive branches. Why I'm talking about this palmar cutaneous branch? Because many people, when they try to actually release this
this carpal tunnel with a transverse incision at this level, they can damage the nerve. And even with the endoscopic release, people, they have found that there is some incidence of damaging this common branch, and if it is severed partially, it gives a quite painful neuroma. And people, they think that is a neuroma of a median nerve, but it is in fact a neuroma of common branch. So that's why one has to be vigilant. One then has this median nerve passes through the carpal canal. It gives us motor first branch. You know that is the motor branch, and the factor of region of this motor branch, people, they call it the recurrent branch to the thinner muscles, and thinner muscle, they are flexor pollicis longus, flexor pollicis brevis, and the third muscle is then key pattern. There is one is immediately after the first in the breath. This is a recurrent branch and ligamentous. Then underneath this ligament very close, ligamentous. Then actually less or if you doing endoscopy or means have to be careful. They can, if they are trying to do deeper or trying to do a neurovascular branch, can be them. You know that after it emerges, the six branches. These two branches, the three branches, they are called common digital nerves. Now, these are the proper digital nerves. Okay, so these are the three proper digital nerves, two for the thumb, for the radial and the ulnar side, and one proper digital nerve is for the radial side of the index finger. Then there are two common digital nerves, first for the second and the third vertebrae. That will go to the index and the middle one, and the second it will go to the middle and the ring finger. So these are actually six branches they arise. Then from the radial common digital nerve, a motor branch goes to the lumbrical muscle, and then from the first common digital nerve, this is the proper digital nerve to the index finger radial side. From here, one branch goes to the first lumbricus, motor branch. Then from this first common digital nerve to the second nerve space, a motor branch goes to the second lumbrical. And we know that the lumbrical innervation first and second go 60% in cases from the median nerve, and or more than 60%, and 20% cases, the second lumbrical, it may get actual innervation from ulnar nerve, and in the next 20%, it can have a combined from median and ulnar nerve, both motor innervation. So this is actually the same text which I have described on that diagram. We know that the etiology of a carpal tunnel syndrome, I always actually try to explain to my patient that this is a tunnel, and by the compression of median nerve, I only say two sentences, and this was actually always been explained by my teacher, Dr. Tasin Chima, that there is a passage, either this passage becomes narrow, whatsoever is the cause, or the passenger they become fat. So these are the two major causes, although many people they describe these things in a different ways, but most of the time it is an idiopathic carpal tunnel syndrome which we are encountering. There are intrinsic factors which can increase the volume within that canal, when there are intrinsic factors within the nerve, and extrinsic factors, they can actually alter the contour of that tunnel also. And then some people, they have also described neuropathic factors, that people who have diabetes, neuropathy, vitamin toxicity, deficiency, and exposure to the toxins, they can also actually explain some element of neuropathy and symptoms of the carpal tunnel syndrome. So, it's a combination of a mechanical trauma, increased pressure, and ischemic injury to the median nerve within the carpal canal, which leads to compression of a nerve, and it's a microcirculation, and that ultimately causes signs and symptoms of carpal tunnel syndrome. We know that there is an inside pressure within that canal. It's a closed canal. It's a 2 to 10 millimeter of mercury. But changes in that fluid pressure actually occurs with the extreme position of this. In an extension, it increases 10 times. In flexion, it increases 8 times. And the repetitive hand movements, they have been implicated as one of the major causes, especially those professionals
who are keeping their hand in a one extreme position. That's why we ask the ladies when they present to us that at what time your symptoms they are exaggerated. Although these symptoms initially starts nocturnal, but during household kitchen work, they are actually even peeling those potatoes or just cutting onion. Their hand is in one particular position. It causes actually extreme thinking of that nerve, little microschemia, and then reproduction of those symptoms they are seeing. And experimental studies, they have actually suggested that there is a definitely dose response curve. Greater the duration and amount of pressure, more significant is the neural dysfunction it is seen. It is especially a repetitive posture which causes a microschemia to the nerve. So demyelination of a nerve, it can occur due to repetitive trauma. Higher the pressure, especially with the systolic pressure, it can produce a focal demyelination. And demyelination of nerve develops at the compression site, and it can lead to initially from the one internodal distance, and it can spread proximally and to the distal node. So it's basically a compression, microschemia, and ultimately it leads to that there is a initially blockade of a nerve transmission, nerve impulses, transmissions they are blocked. And as this compression further increases, it actually leads to disturbance to the endoneural capillary vascular system. And ultimately, we know that the blood-nerve barrier is broken. Once it's broken, then a vicious cycle of a fibrosis starts, which leads to some irreversible changes. So, as I was telling that it is consisting of that vicious cycle, congestion, ischemia, local metabolic alteration which are seen. It starts with axonal degeneration, macrophage attraction and its activation, release of those inflammatory cytokines, nitrified, and development of a chemical neuritis. So once some of the nerve fibers, they have gone beyond the stage of a neuropraxia, where it's not only a cessation of those nerve impulses, endoneural circulation has been damaged. As the degeneration actually starts, the changes, they become irreversible. We know that median nerve, it has certain gliding mechanism, which as the Tenon we call that as a excursion. During the flexion extension, median nerve also glides smoothly within that carpal tunnel. But the chronic compression, it can lead to little fibrosis, and it can inhibit that particular movement of its median nerve within the carpal tunnel. And it can lead to a fibrosis and tethering of a median nerve around those flexor tendons, and with the extreme position, it forms the basis of actually less motion. Once this carpal canal, median nerve is tethered within the flexor, within this carpal canal, we see that symptoms not only they are reproduced, but one can see that with a small stress over that nerve, you can see reproduction of symptoms. And this is the basis of a tethered median nerve test, which can be used to diagnose a chronic low-grade carpal tunnel syndrome. You see, you do an extreme stretch of flexion, or extreme stretch of flexion. With that, the symptoms are produced within 30 seconds or within 1 minute. So, ischemic injury is the main thing, and people, they have described it in a different stages, that there is increased intravascular pressure, capillary damage, and obstruction to its arterial circulation. And I have also talked about this blood nerve barrier. I will not go into the further detail of that, but the synovial thickening, it has been seen in a certain chronic inflammatory conditions, and those workers who are using their hand repetitively, its synovial membrane becomes thick, it increases the pressure within the carpal canal, and it sometimes the hypertrophy of tendon. People who are performing a manual work, especially a hammering and a strong gauge work, the tendon, they also become hypertrophic. And hypertrophic tendon, they can initiate with a synovitis. Tenosynovitis itself is because of rheumatic disease or chronic synovitis or some other diseases, along with manual worker where hypertrophy of tendon, it induces little fibrosis. It can increase the content of a carpal canal and lead to a compression of a median nerve. So there are other actually causes of carpal tunnel syndrome.
sometime I have also encountered that there are excessive muscles, and I have seen in a couple of cases palmaris longus tendon, instead of tendon, there is a complete muscle going into the carpal canal, and those abnormal muscles, they can cause compression of the nerve. Occasionally, flexor superficialis and profundus, their muscle belly, it can extend into the carpal canal and cause compression of the nerve also. So we know that the symptoms, they start in a vague fashion. Most of the time it's a pain, unpleasant tingling sensation, and we know that there are three common symptoms which we say it's a pain in the distribution of the median nerve, numbness, and paresthesia. They start, and later on, apart from a sensory component, motor component is being compressed, we see that there is a reduction in the grip and function of affected muscle also. And the symptoms, they are worse during the night time. Why nighttime the symptoms are worse? Most of you know that during the daytime we're moving and microcirculation is improving with the movement of the hand. But at the night, your hand is in a flexed position in one particular position, it is lying. And with a prolonged 2-3 hours of a REM and a deep sleep, once you are actually lying down, your wrist is usually in a flex. And commonly is, we say that a person who is actually awake, he is performing motion, and person who is lying is equivalent to that. And the wrist in an extreme flex position, it causes thinking, microsthenia, and compression of a median nerve, leading to weakness of symptoms in the night from their sleep, and then they start moving the wrist, and which we call the flick sign, that with the wrist motion, microcirculation improves, and over a period of next 10 to 15 minutes, their symptoms in the especially numbness, paresthesia, and pain in the finger improves, and then the person goes into sleep again. So that kind of symptoms, they start very early. The severity of symptoms, again, it's a variable, and various large multi-center studies, they have confirmed that patients with mild to moderate carpal tunnel syndrome, they can actually present with different sets of symptoms and mild functional disability. But if a person has a severe carpal tunnel syndrome, the set of symptoms, they would not be severe. Maybe because of a severe compression, nerve fibers, they have gone to degenerated, and because of the degeneration of nerve fibers, the sensibility has reduced. So that's why the set of those sensory symptoms are less. Similarly, the motor weakness has increased, and they do not actually complain of those severe symptoms. Then people, they do complain of a subjective feeling of a heaviness. Not only they say that there is swelling in the hand, although there is no physical swelling, but people, they say their hands are heavy. And many people, they feel when people, the patient have started to feel this heaviness, this is a much more a diagnostic value. And in those people, the EMG nerve conduction sense much more higher, and it becomes a more stressful. Of presentation, people, they have a proximal radiation. Not only pain and numbness symptoms go into the hand in 70% of the cases, but more than 30% of people, they have a symptom which radiate proximal to the arm, elbow, forearm, shoulder, even up to the neck. And people, they have come up to with a Reiter syndrome. So, and one can actually see those people who have work-related reproduction of a carpal tunnel syndrome. Those, they have been labeled as a dynamic carpal tunnel syndrome. Symptoms, they were actually reported in a median nerve compression in a different pattern, that the 21% of the patients, they can have a forearm paresthesia, 13.8% elbow pain, 10.5% with the arm pain, 6.5% shoulder, and similarly neck pain. And incidentally, people, they have reported that the trigger finger is associated with the carpal tunnel in more than 20% of the cases. Now, early symptoms, we know that these are the nocturnal symptoms. And once actually you do perform provocative tests, there is a reproduction of symptoms. But certain people with their work habits, they have also actually lot of actually reproduction of symptoms, especially when they start playing certain instruments or they start doing certain work. So waist maneuvers, they can help to see what is the exact site of a compression, but there are predisposing factors. Most of you know that
diabetes, obesity, chronic polyarthritis, acromegaly, increased body weight. These are the things which can be seen. Paper, they actually divided the symptoms into 3 stages. That stage 1 is the initial stage when people they have a nocturnal symptom, and there is a severe pain, and their pain actually radiates with the proximal to the shoulder, and they do have a flick sign. In a stage 2, where here the not only the sensory symptoms are predominant, but the motor symptoms they have started to develop. And stage 3, where the motor weakness actually starts apart from sensory, and one can see there's a wasting of thinner muscle. The diagnosis, you know that for carpal tunnel, the first and the most important thing is the examination of both hands simultaneously. Both hands is mandatory because many people that do have a symptom on the both hands are predominantly in one hand. For a fine touch, crude touch, or even with a fine pricks, you have to actually do this test on the both sides, not only one on the involved side. Then you do its sensory and complete motor examination, grip test, and the position. I usually ask them to do a just abdominal O sign, where you can see check 5 basically intrinsic muscles, as well as you can also check the thinner muscle power with that. So provocative test, we know that the Phelan test, reverse Phelan test, Stinel sign, everyone is familiar, and we know that the sensitivity and the specificity of these tests, they have been described in the literature in various ranges, but the Phelan test is the one which is much more reliable. And Stinel sign, we see that its sensitivity is in a range of almost 73%, but specificity is less. And people, they have also come in those who have a work-related injury, and especially the pregnant women, arm raise test. With that, as you raise your arm for 1.5 minutes, then you start developing the symptoms of carpal tunnel syndrome. So, still the gold standard for carpal tunnel syndrome to be diagnosed, it remains the nerve conduction study. And we know that they were initially developed in 1956, and in nerve conduction studies, what we do? You put actually on one side stimulating electrode, and on the other side receiving electrode. And it can be put vice versa, that you can put stimulating electrode distally and the receiving electrode proximally. And then as you with the stimulating electrode, you give little stimulation, the receiving electrode actually records that's amplitude and the delay in the response in the sensory as well as in the both motor component. We see that how it can be seen. We know that little focal damage across the median nerve, it can be actually identified with this nerve conduction study. And this study, your technician and has to be really an because it needs little gauging of, and most of the time I say EMG should be performed not by the technician, it should be done by the consultant. So nerve conduction studies help to quantify neurophysiological activity, and especially it drives your pathology that at what stage it is. Is it a very early stage where you call it the neuropraxia? And remember that your EMG nerve conduction study, it can be negative, and people, they may not find anything. But person may have a symptoms of a carpal tunnel syndrome, as in the case of a dynamic and very early cases. And cases you actually ask a person to do certain provocative postures before actually undergoing nerve conduction study, especially when like in a lateral cutaneous nerve of thigh, people when you send for a carpal or EMG nerve condition, they say that there is, but if not still is coming actually bulges and causes compression of the nerve, then they do the test will become positive. So EMG nerve conduction, it may be a negative, but person may have a symptom of a carpal tunnel syndrome. So still it is called a gold standard. It's an objective test, and it can actually basically it compares the latency and amplitude across the involved segment of a median nerve, and it is compared with the other index nerve like the radial nerve and the ulnar nerve segment at the same place where how that conduction is occurring in that component. So electrophysiological studies, there have been various guidelines, and people, they have come a various set of a interpretation. So American Association of a Neurologists and EMG nerve condition experts, they actually came up with 5 grades.
In one, that there would be a normal finding in all the tests. No sensory or motor component would be involved. In a two, abnormal findings are seen on a comparative studies in a sensory component. In three, you see that there would be only in a finger wrist stack, there would be some abnormality they can detect. And at the same time, they will see that distal motor latency, it would be increased in grade 4. In grade 3, distal motor latency is still intact. In grade 4, they will say that there is some motor involvement. And then in grade 5, there is extreme involvement that we say that there is degeneration of nerve. So the one is a normal, type 2 is abnormal sensory component, type 3 sensory component increases, but motor component is intact. And type 4, I interpret that there is a involvement of motor component in mild to moderate, but in type 5, there is a severe involvement of both sensory and motor component, where we see that the wasting of the muscle can be seen. So, the other test which can be helpful is MRI. Although people they like and various studies they have compared that the MRI is still a good test. If you ask a certain percentage of people MRI, because it is a not painful test and they can get this test easily. Here in MRI, they can actually see the diameter of carpal canal. MRI actually is much more reliable, and people they have seen that you can see the involved segment of a median nerve where it is compressed, where it is swollen, and there is a pseudo almost swelling of a median nerve within the canal. And distal to the compression side, nerve can be seen flat as well as diameter and canal it can be measured. And apart from that, you can see length of a median nerve it has been involved, and people they have correlated it with the clinical symptoms and with EMG nerve condition and also with an ultrasound finding also. So it is also helpful in other to diagnose other soft tissue conditions like ganglionisis, tumors, bony lesion, and especially in certain people where EMG nerve condition is not diagnostic, it actually helps to see that. Now, in atypical presentation, MRI is helpful, and people after surgery, if they do not actually respond and in their symptoms they do not improve, I would like to get actually MRI to see that is there any finding, maybe the surgeon has not done a good job with the use of a carpal ligament. So MRI is a good tool. I have already described that the American Association of Neurologists, occupational therapists, and people they have said that EMG is a much more superior tool as compared to an MRI. But most of us, they will actually go for EMG nerve connection. MRI is not cheaper, it is a costly. Moreover, the people who can actually read an MRI, they lack the background knowledge. There are very few expert people who can actually see all those factors, dimension of canal, measuring the pressure, seeing the segment on T1 and T2 images, how much there is a flattening of the nerve and compression, and other soft tissue abnormality they can be seen. So in a differential diagnosis, we know that we have to see that cervical radiculopathy. Many people, they are familiar with the term double crush syndrome. People that do have a compression higher up in the neck, as well as they can have a compression in the wrist also. Then brachial plexopathy and the median nerve neuropathy, especially in the forearm. We know that there are two sides of a compression in the forearm. Laceratus fibrosis between the two tendon of the pronator teres, then underneath the flexor deferens superficialis it can be seen. And one of the topics which will be discussed is the classic outlet syndrome also, and certain CNS disorders, they have to be considered. Now, there are actually American, it's a CATS actually table, they thought that EMG nerve connection and only symptoms, they are not sufficient. They came up with a diagram that what are the sensory symptoms in terms of a sensory loss, pain, presthesia, and the motor weakness. And CATS actually hand diagram, it was in the early, in the last 2 decades, it has become very popular in America. On the one hand, they actually put up their sensory symptoms and then the finding of EMG nerve connection, and they have come up with 3 scores. They range from 1 to 9, and depending upon that symptoms, you actually come up with its indication for the surgery. And
This is the recent literature from US. It has been published in our AOS journal also, that what is the probability of having a carpal tunnel and in a decision making. So you look at their symptoms, EMG, nerve connection, then clinical scores and response to the previous treatment. Based on that, it is a very lengthy table, and I can actually refer to that article. People can go read it. But in our stuff, at least initial, my management is always, once I have diagnosed that it is a carpal tunnel syndrome, I do not actually send my patient immediately for EMG nerve connection. I actually give them a wrist brace, start with little neurogenic pain, especially the glucosamide and gabapentin. They do help. The glucosamide in the morning, gabapentin in the evening, for them during the resting hours, and it helps. And if the symptoms they do not improve within the 4 to 6 weeks, then I will actually go for EMG nerve connection. So you know that the treatment is basically, our objective is we need to relieve their symptoms, and we have seen that symptom relief, even with your surgical treatment, it can be up to 80-25%, not more than that. The partial relief is seen in 10%, there is no change in 9%, and even 1% of the patients, they said there is a worsening of symptoms, especially those who have diabetes or illness, and to improve its motor function, which occurs most of the time over a period of next 3 to 4 months. So when you opt for a surgical intervention, people will ask, our symptoms will improve. First and the most important, if there was some sensory deficit, it will take another 3 to 4 months, and the motor power, it will take this much time to improve. These are the important questions. In the conservative treatment, we know that the stenting, non-steroidal, neurogenic pain medication, local diet, job modification, these are all things one has to try before actually surgical intervention. So we know that the surgery is a release of transverse carpal ligament, which can be done by open or by endoscopic training and performed in a couple of cases. But doing an open treatment, there are certain reasons, financial burden to the patient also, and time, especially endoscopic, you have to perform under general anesthesia, while the local anesthesia is preferable for a surgical open release, which can be with a classical large incision, with a mini small incision, is even between the valley, between the thinner and hyperthinner elements, and that incision length, it can be 1.5 to 2 centimeters. And people, they have come up with a single transversal incision at the proximal crease, which is again from 1.5 to 2 centimeters. Then I have opted my own two-ported small incision technique, which I will share with you for the last 20 years I'm doing. So this is the classic large incision, which actually extends from the flexor crease up to the valley, and it goes to the base of thumb. When I was resident, I learned this technique, but over the last 20-25 years, I have not actually done with a classic technique. I do with a small mini incisions, either single or 2 small portal incisions. So in this diagram, you can see this transverse incision can be used, this big incision can be used, or this small mini incision can be used. All sort of things they can have been used. But for a dual portal or a single portal endoscopic release, the 2 incision has to be made, patient has to be anesthetized, and there's a lot of cost associated with endoscopic release, which although it is being done in our country also, it for a learning purpose, it's good, but has it any mechanical or any advantages over a small mini incision versus this endoscopic? At least to me, the answer is still not actually clear. I still actually do with a small mini incision. And you see, there are various techniques just described. I will just actually see. I give it 2 small incisions, not click. Can I let me go to minimize it, and it will take a minute because I just want to show you. See actually the tenon of palmaris longus, which has been detected with the small detector, and ये इनिशियली मैंने जो ट्रांसवर्स लिगामेंट का पोर्शन है वो साइज किया, और फिर मैकडोनल्ड उसके अंदर नीथ पुश करके स्ट्रेचिंग अंडर सरफेस ऑफ ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, ठीक है ना, ये आप यहाँ चले गए, यहाँ पे फिर आप at the tip you can feel distally at the tip, and at this tip you can actually make a small
Seen again 1 centimeter. I usually excise little fat around it, और ये टिप के ऊपर palmar aponeurosis का portion होता है, which I cut with the knife, and then identify the distal portion of this transverse carpal ligament. अब ये McDonald इसे prominent सामने आ जाता है, and then you buzz if there is a small vessel, and with 15 or with this sickle-shaped knife, you actually make half of cut here under VN. You can see here at this time, you flex your wrist so that you can actually see that ligament. And as this thing is being done, and one can see the cut edge of that ligament. And the rest of thing, you can see that there is this curved knife, you can go proximally. And then at the same time, half of it you have cut distally, and this half you will cut proximally from here. And as you have cut this proximally, you are actually seeing, peeking through, and the moment this transverse carpal ligament is completely severed, it will come subcutaneous. Now, as you will lift your, and if there are certain fiber, you can actually put scissor and see that it is completely severed. And now you lift your McDonald, and it would be subcutaneous. So why I prefer this technique here, then I do not actually apply any tourniquet, buzz these vessels with a bipolar if there are small vessels, because many times there is a vessel coming through the ligament, and then apply 2 horizontal mattress stitches. Okay. All right. So I will go back to my, why I prefer actually that small 2 incision, because to avoid a pillar pain. With a 1 incision, even a small incision that you give between the valley of a thinner and hypothinner longitudinal incision, many people, they do complain of a little hypertrophic scar and a pillar pain. But with these 2 small portals and an endoscopic release, the incidence of pillar pain, it has definitely gone down. So the various complications of the surgery, you can see the painful neuroma of a palmar cutaneous nerve. Sometimes you can section the motor branch with a subsequent weakness, ossificative fibrosis and hypertrophic scarring, and sometimes a tender scar. Even if you do this small single incision or a 2 portal incision, you do actually encounter. And this pillar pain, which I was talking about, this is very poorly understood, but still people, they do have. And then there are chances of wound infection, and occasionally you do see the bowstringing of a flexor tendon if you have gone with that classically large instrument. So my conclusion would be, you see, the diagnosis has to be established based on your thorough history, physical examination, and then surgery should be performed by a person who is expert and who is very well familiar with the use of magnification loop, so that he can perform surgery in a better way. And the surgery, it has to be really safe, and one can try a conservative treatment before thinking of having surgery. Maybe if you want to have a little break, we can actually discuss a certain question answer, and then I can talk about Gyan's canal ulnar nerve compression. Or should I continue with this ulnar nerve compression? You see, Gyan's canal ulnar nerve compression, it was described by King Casimir Flex Gyan in 1861, and since then on his name, it is still described as Gyan's canal. Now, anatomy of Gyan canal, it's a wavy path which starts at the level of a flexor carpal crease, and it starts superficial to the palmar carpal ligament between the pisiform bone and the hook of the neck. And people, we know that the ulnar nerve, it has at this level sensory component, 1.5 ulnar finger, and the motor muscle. We know that except the thinner muscle, all other, even adductor pollicis, lumbrical, and crochet and hypothinner muscle, they are, except the first and the second lumbrical, they are innervated by the ulnar nerve. I will go quickly over it.
people, they know that it is a wavy path, and it has been described by the Dilberman into a 3 different zones. And they say that length is almost 4 to 4.5 centimeter. They have divided into 3 zones, zone 1, 2, and 3. I will just quickly go to zone 1, which is 3 centimeter in length, and this zone 1 contains the both sensory and motor component of the nerve. Zone 2 contains only the motor component, and zone 3 contains the sensory branch, which goes the sensory cutaneous branch to the over hypothenar, and the sensory cutaneous common, and the propodigital nerve to the under 1.5 fingers. So I will go quickly over it. Physical examination, again, it is a history, thorough physical examination, and all tests which you have to do for intrinsic muscle. You need to look at on physical examination any signs of decline and any weakness of an intrinsic muscle. I will not go into the detail. Maybe Dr. Chima will actually discuss in detail all those tests, and he will actually show that. I just illustrated those fingers, and we are familiar with the stomach sign, gene sign. I will not actually elaborate. Subjectively, we see that symptoms, they are predominantly in the little and the ring finger, which are seen, and the weakness is also seen. And people, they can, if they come late, you can see atrophy of those muscles, of especially first dorsal interosseous, some flying, and in crochet spaces, one can see a little space also. And apart from this, you do your physical examination and perform Allen test. Many people, they do have some toxicity of a ulnar artery, and it may be associated with some aneurysm. Diagnosis is basically based on a examination. You do an X-ray to see that is there any fracture of the hemorrhage, physiform bone, or some tumor. Then final diagnosis is on EMG nerve conduction, and the MRI is usually recommended in these cases because many times you see ganglion within first, second, or the third. Within the second and the third zone, a ganglion or a fracture or some tumor or an aneurysm, these are the causes. So apart from EMG nerve conduction, you will do that. Then it comes conservative. We know that what is its treatment. Ultimately, surgery is an answer when you see that sensory and motor symptoms are not being improved with the conservative treatment. Okay, thank you. So I can take questions. Dr. Parvez Hashmi, thank you for the excellent talk. Can you elaborate on the difference in the risk to the palmar cutaneous nerve between the different approaches, and what is your best suggestion for us to avoid that injury? सर प्रवेश साहब अपना अनम्यूट करें माइक, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल आवाज कट के आई है, अगर क्वेश्चन आपने सुना हो तो मुझे बताइए। I can repeat that. What is the difference in the risk of palmar cutaneous nerve injury between the different approaches that you showed, and what is your advice for how we can avoid that injury? Tasmin, very good question. You see, in the beginning I said that it nerve arises almost 5 centimeters proximal to the wrist crease. You see, there are 2 wrist creases. If you can see, the first wrist crease is actually, it shows the surface anatomy of the flexion zone of your radiocarpal joint. Exactly 0.8 millimeter proximal to it, it actually pierces the fascia and then it runs distally. So when you are actually making your incision, it should do only cut the skin. One should not actually go deep cut incision or gangul incision. Because immediately when you cut it, there are small cutaneous veins which are visible. One can coagulate those veins, identify the tendon of palmaris longus, and you detect the tendon of palmaris longus on the radial side. That takes care of everything. Once the tendon has been detected on the radial side, because the nerve is on the radial side of a palmaris longus tendon, so everything would be safe. If you try to detect this tendon on the ulnar side, then chances are you are going to cut the nerve. So this is the one practical tip which I use. I learned from Dr. Tassim, and it helps very well.
But if people, they are actually cutting the tenon of palmaris longus, then the chances are that they can actually cut this branch also. Other thing is that you need to wear a magnification loop so that you can identify those small cutaneous branches. The third thing is incision, which is placed a small mini incision in the, it takes care of this branch. That incision actually saves your palmar cutaneous branch. It is a transverse incision which people they play for an endoscopic release or for a mini open incision transverse. Those incisions, they are vulnerable to damage palmar cutaneous branch. So one has to be careful when you are making this transverse incision at this palmar crease. I hope I have given some information. Thank you. Okay. Dr. Pervez, I have a question. Yes. What is the incidence in your practice of a communicating cutaneous branch from ulnar to median, which is which runs transversely across the approach? Yeah, you see, I get actually very small incision make a portal, and many times actually in a thick obese person I give a small thin incision in the valley between the thinner and hypotenuse. When you make a standard long incision, the chances are that transverse communication between these two nerves, it is going to damage that transverse communication. But again, magnification loops, background knowledge, and identification of structure, they are the hallmark. I have seen in a 20 years career, maybe Dr. Chima has much more experience, only a one transverse communication. And one case of a splitting of this median nerve into two halves. One was going under this ligament and one was going up superficial to the ligament. And as actually I do a mini approach in CN, so when I was actually just cutting that ligament, I saw that half of nerve is going to the superficial, this flexor retinaculum, and half is going deep. Then immediately I converted the incision into a mini incision so that I can dissect that branch and do an open release, complete open release, not two with the two small incisions. So this is an unusual thing which I have seen once in my career. But looking at that transverse cutaneous communication, I have hardly seen. Thank you, sir. Thank you. को एक शेर सुनाते हैं कोरोना के हवाले से। आपके साथ मोहब्बत है सो काफी है बहुत, आपके साथ मोहब्बत है सो काफी है बहुत, आपके साथ मुलाकात की ऐसी तैसी। अब मिलेंगे भी तो एक फासला रखेंगे, रहे जज्बात तो जज्बात की ऐसी तैसी। बहुत खूब। हाशमी साहब, ये आपके जो स्मॉल इंसिजन है, ये दो को जमा करें तो उतना ही इंसिजन बन जाता है जितना एक रेगुलर कार्पल टनल रिलीज का है। जी सर जी। Only thing one will lose the advantage of actually seeing the median nerve. Yes. कि मीडियन नर्व की हालत क्या है, कोई वहां अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग चीज है, कोई और चीज है, लीजन है, गैंग्लियन है, वो आप नहीं देख सकेंगे। I totally agree with you, sir. इसमें we preoperatively mostly तो ये idiopathic की हमारी variety होती है, but in those cases where you suspect कि rheumatoid arthritis है, or you are thinking that there is some swelling, clinical examination पे, then I go for the mini incision to start with, and accordingly I can extend. So I use actually both the incision, two portal as well as mini incision. बट मिनी इंसिजन का सिर्फ मुझे जो एडवांटेज लगा है, क्योंकि 20 सालों से मैं यूज कर रहा हूँ, कि लोगों को पिलर पेन नहीं होता और स्कार उनका कोई इतना हाइपरट्रॉफिक नहीं होता, लेकिन किसी में भी स्कार हाइपरट्रॉफिक हो सकता है। जो छोटे इंसिजन से स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके बारे में boy, it's like making love. If you are struggling, if you are working hard, you are doing something wrong.
वो सर वो ऐसा है कि मेरी तो अब ये आदत हो गई है कि आई जस्ट एक्चुअली व्हेन एक्चुअली रिलीज द प्रॉक्सिमल पोर्शन आई पुट द रिस्ट एंड स्लाइड फ्लेक्शन न्यूट्रल टू फ्लेक्शन, और जब मैं आप डिस्टल से कर रहा होता हूँ तो हल्का सा एक्सटेंड करता हूँ, एंड विद द magnification loops and the lights over the head you can actually see clearly कि आपने लिगामेंट जो है ना वो सेवर कर दिया। एंडोस्कोपिक का आपको पता है उनका भी, और उनका इंसियन भी ऑलमोस्ट मिनी इंसियन, जितनी मैंने बाहर जाके वर्कशॉप्स भी की हैं और उसकी ट्रेनिंग की है, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ मुझे एडवांटेज पिलर पेन का लगता है। सेकंड, बड़े अरसे के बाद फिर मैंने ये छोटा मिनी इंसियन से किया। यू आर एब्सोल्युटली राइट, मिनी इंसियन से आपको यू कैन एक्चुअली अंडरमाइन, लिफ्ट इट, सी इट, एंड नर्व को तो अभी आपको पता है कि नोबॉडी डज अ न्यूरोलाइसिस, नर्व को तो हम छूते नहीं, ठीक है, और ओनली यू जस्ट रिलीज दिस ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट एंड द सिम्पटम्स आर रिजॉल्व्ड। अब बहुत सारे लोग एक ही दरवाजे से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। कार्पल टनल छोटी सी जगह है, उसमें 9 टेंडन है, एक मीडियन नर्व है, तो वो मीडियन नर्व बेचारी वो छन्नो जो है वो क्राउड में फंस जाती। एक तो ये कॉमन सिनेरियो है कि जगह कम है, कंटेंट ज्यादा है और प्रेशर बढ़ जाएगा, और जगह अगर पहले से कम है, अगर वहां कोई स्पेस आपको गैंग्लियन आ जाएगा, कोई गैंग्लियन आ जाता है, कोई मसल एबनॉर्मल मसल आ जाता है, दैट विल फर्दर इंक्रीज द प्रेशर, एनाटमी एबनॉर्मल। फिर दिस इज वेल प्रूवन कि नर्व को स्ट्रेच किया जाए, जैसे एल्बो में होता है कि अल्ना नर्व इज बीइंग स्ट्रेच एवरी टाइम यू फ्लेक्स एल्बो, that will also produce ischemia and reduce the blood supply. So in many situations that is one cause of compression neuropathy, और probably जैसे आज मेजर साहब बता रहे थे, कर्नल साहब बता रहे थे, thoracic outlet में भी शायद वही mechanism है कि in a young female with drooping shoulders, with a weak trapezius, shoulder droop करते हैं और pressure बढ़ जाता है, और nerve जो roots stretch होती हैं और between clavicle and the first rib उस पर प्रेशर आ जाता है। फिर पोजिशनल और ऑक्यूपेशनल है, तो ये दिस इज समवट कंट्रोवर्शियल कि प्रोफेशन का एज सच कोई असर है या नहीं है, लेकिन दिस इज कॉमन सेंस कि एक एबनॉर्मल पोजीशन रिपीटेडली, इफ दैट प्रेस अ नर्व, दैट विल कॉज सम डैमेज। फिर जैसे कर्नल साहब ने सुबह बताया कि post-traumatic situations and which will cause scarring and fibrosis, that will make the nerve more vulnerable to further compression. और फिर कुछ predispositions हैं, मसलन अगर डायबिटीज है, hypothyroidism है, इस तरह की और कुछ congenital problem है which makes the nerve more vulnerable. So in different places these can be different scenarios. Like in carpal tunnel, I think traffic jam is a real thing. The space is very limited. In around the elbow, it is a movement of the nerve, especially for the ulnar nerve. Every time you flex the elbow, there is stretching. So these are different factors which can act alone or in combination to cause compression neuropathies. अब evaluation किसी भी nerve की या वैसे तो किसी भी प्रॉब्लम की करनी हो तो 2-3 ही तरीके हैं, हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, कुछ टेस्ट होंगे। अब हिस्ट्री तो विल डिपेंड ऑन पेशेंट सिम्पटम्स, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, सेवेरिटी कितनी है, कोई कॉजेटिव फैक्टर है या नहीं है, कुछ प्रीडिस्पोजिशन है कि नहीं। अब फिजिकल एग्जामिनेशन है वो यू कैन डिवाइड इनटू 3 थिंग्स, कुछ प्रोवोकेटिव टेस्ट है, कुछ सेंसरी इवैल्यूएशन है और बाकी मोटर इवैल्यूएशन। ये 3 ही किस्म के टेस्ट हैं एनी कंप्रेशन न्यूरोपैथी, चाहे वो कार्पल टनल हो, चाहे क्यूबिटल टनल हो, चाहे थोरैसिक आउटलेट, ये 3 ही किस्म के टेस्ट हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको कॉन्सेप्ट के तौर पर समझें बजाय कि ट्राई टू इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग इट। और फिर इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडीज हैं, विल कम टू दैट, कि उनकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं और you cannot interpret electrodiagnostic studies in isolation. That always has to be in the context of history and physical examination. अब provocative test तो हम डिस्कस करेंगे for each entity, उसके कुछ, और वो 2 ही किस्म के होते हैं। अब provocative test को भी आपने in principle समझ लेना है। 2 ही चीजें आप कर सकते हैं, या तो उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे
किसी भी चीज से, या उसको नर्व को स्ट्रेच करेंगे एंड दैट शुड रिप्रोड्यूस अ सिम्टम। अब आपको ये प्रिंसिपल समझ आ जाए तो यू कैन थिंक ऑफ योर ओन प्रोवोकेटिव टेस्ट इन एनी गिवन सिचुएशन। या तो आपने प्रेशर बढ़ाना है या आपने स्ट्रेच करना है नर्व को, एंड दैट विल रिप्रोड्यूस अ सिम्टम। अब हम जब सेंसरी इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं और क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लाइट टच भी कर सकते हैं, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं, सैमिज वाइनस्टाइन वो फाइब्रल्स भी हैं, मूविंग 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन भी है। ईच टेस्ट इज टेस्टिंग डिफरेंट थिंग। वजह ये है कि देयर आर 4 सेंसरी रिसेप्टर देयर आर फाउंड इन द ग्लैब्रस स्किन और वो डिफरेंट काम कर रहे हैं। देयर आर स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर जैसे मर्कल सेल न्यूराइड कॉम्प्लेक्स है और रुफिनी एंड ऑर्गन्स हैं, और फिर वहां पे क्विकली अडेप्टिंग रिसेप्टर हैं लाइक जैसे मीसनर और पैसिनियन कॉर्पस्कल्स हैं, एंड दे रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई। इसलिए ये समझना जरूरी है कि आप जो पर्टिकुलर टेस्ट फॉर सेंसरी इवैल्यूएशन कर रहे हैं, आप टेस्ट क्या कर रहे हैं। कुछ जो टच के टेस्ट हैं उनमें थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट है। थ्रेशोल्ड एंड tactile discrimination of the quickly and slowly adapting receptor can be evaluated. Threshold is a minimum stimulus जिससे वो जो हैं एक्सन स्टिमुलेट हो जाए। अब इसमें ये समझना जरूरी है कि जो कुछ टेस्ट अर्ली ऑन पॉजिटिव होंगे, कुछ बहुत लेट पॉजिटिव होंगे। अब 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो टेस्ट है, which we very commonly do in sensory testing, that's not a good test for compression neuropathy, क्योंकि जो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट है वो टेस्ट कर रहा है कि नंबर ऑफ एक्सन जो आप एक वक्त में स्टिमुलेट कर सकते हैं, और ये तो अफेक्ट होगा बहुत लेट इन एनी कंप्रेशन न्यूरोपैथी। अर्ली ऑन जो टेस्ट कंप्रेशन न्यूरोपैथी में पॉजिटिव होंगे वो है वाइब्रेशन और थ्रेशोल्ड टेस्ट। सो सबसे ज्यादा सेंसिटिव या स्टैंडर्ड टेस्ट है सैमी वाइनस्टाइन अगर फाइब्रल्स आपके पास हों, या फिर ट्यूनिक फोर्क भी बड़ा इजीली अवेलेबल हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली जो लाइट टच है and comparing it to the normal side, if other side is normal, that is always the available test or सबसे practical situation। ये जो 2 point discrimination है वो है late situation के लिए। अब ये these are different modalities, ये वो semi Weinstein fibrils हैं, ये moving 2 point discrimination है, ये static 2 point discrimination और ये vibration। अर्ली ऑन जो है वो लाइट टच इफेक्ट होगा, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इफेक्ट नहीं होगी। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन अच्छा टेस्ट है नर्व रिकवरी को टेस्ट करने के लिए। अब कुछ आपने सुना EMG नर्व कंडक्शन स्टडीज के बारे में, उसके बारे में लेट मी गिव यू सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर तो आप टोटली रिपोर्ट पे रिलाय करेंगे, रिपोर्ट बाय ये फिजिकल जो जिसने भी किया है, न्यूरोलॉजिस्ट ने किया है, इसको आप बिल्कुल ऐसे लें जैसे एक्सरे के लिए आप डिपेंडेंट नहीं है रेडियोलॉजिस्ट पे। अगर आप रेडियोलॉजिस्ट पे डिपेंडेंट हो एक्सरे को इंटरप्रेट करने के लिए तो बहुत सारी डायग्नोसिस मिस करेंगे। आपने भी EMG को खुद इंटरप्रेट करना सीखें, उसका कुछ बैकग्राउंड हासिल करें, ओनली देन यू विल बी एबल टू कोरिलेट इट विद द क्लिनिकल सिचुएशन। अब इसकी कुछ लिमिटेशन आपने समझनी है कि क्यों ये लिमिटेशन है। A major weakness of the nerve conduction portion of the, उसके पहले तो ये समझ लेंगे 2 पोर्शन है टेस्ट के। एक नर्व कंडक्शन स्टडीज हैं जिसमें आएगी लेटेंसी और वेलोसिटी, और एक है EMG जो एक्चुअल मसल को टेस्ट करती है। ये 2 अलग-अलग पोर्शन है, कंबाइन इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक स्टडीज। जो मेजर वीकनेस है ऑफ नर्व कंडक्शन पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक स्टडी इज दैट इट इवैल्यूएट्स ओनली द लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स, और वो जरा देर से इफेक्ट होते हैं, उससे पहले नॉन माइलिनेटेड जो फाइबर हैं वो बड़ी जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। दिस जो माइलिनेटेड फाइबर हैं, दिस इंक्लूड्स द मोटर एक्सॉन एंड सेंसरी एक्सॉन रिलेइंग वाइब्रेशन एंड लाइट टच, बट नॉट द स्मॉलर एक्सॉन कन्वेइंग पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन। The determination of nerve latency reflects the conduction of the best myelinated fiber rather than the most severely affected axon. And the normal latency may still be present even when many nerve fibers are already damaged.
The first alteration that occurs in the nerve fiber population are the changes in unmyelinated nerve fiber which cannot be evaluated by electrodiagnostic study. तो ये समझना जरूरी है कि अर्ली ऑन आपको बहुत अर्ली ऑन ये जो नर्व कंडक्शन ये आपकी दैट्स नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन. अब जो नर्व कंडक्शन स्टडी में क्या पैरामीटर हैं? आपने लेटेंसी देखनी है, उसकी स्पीड देखनी है और एम्पलीट्यूड. ये तीन मेन चीजें हैं. लेटेंसी क्या है कि आपने स्टिमुलेट करना है और जो वक्फा है दैट इज एक्चुअली एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ nerve conduction and is generally expressed in milliseconds. Sensory nerves are stimulated at one point and recorded at a surface electrode, and recorded latency is defined as the time elapsed between stimulation and the deflection. इसी तरह मोटर लेटेंसी भी आपने स्टिमुलेट करते हैं और देखते हैं कि मसल में ट्विच कब आती है. एम्पलीट्यूड वो जैसे वो जो उसकी डिफ्लेक्शन है उसका जो हायर स्पीक है दैट्स इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड प्रोवाइड्स एन असेसमेंट ऑफ द नंबर ऑफ कंडक्टिंग एक्सॉन्स. जो लेटेंसी और स्पीड है वो तो कंडक्शन वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है और ये है कि जो कितने आप एक्सॉन्स नंबर ऑफ एक्सॉन कितने स्टिमुलेट हो रहे हैं. Amplitude are more difficult to assess, but because they reflect the number of functioning axons, they may give more accurate information about muscle weakness and paresthesias than the latency measures. जो conduction velocity है, that is calculated by stimulating the nerve at two major points. जो दूसरा हिस्सा है ना electrodiagnostic studies का वो है EMG. Nerve conduction study gives information about axon and the myelin pathology. और उसी वक्त ज्यादा इफेक्ट होगी जब demyelinization हो चुकी. For EMG component of the study, needle recording electrodes are inserted into the muscle. और ये आपको 2-3 किस्म की इंफॉर्मेशन देती है. एक तो डीनर्वेशन है कि नहीं. अब डीनर्वेशन कैसे पता चलता है कि जब आप नीडल इंसर्ट करते हैं मसल में तो एक शार्प स्पाइक है और उसके बाद फिब्रिलेशन है. अदरवाइज नॉर्मल मसल उसके बाद क्वाइट हो जाता है इनिशियल. सो देयर इज एबनॉर्मल इंसर्शनल एक्टिविटी है और फिब्रिलेशन है. Fibrillation potential are the most sensitive indicator of motor axon loss and can be seen in nerve compression syndrome long before there is clinical evidence of muscle weakness. तो ये recognize करना या पढ़ना बड़ा जरूरी है कि आपके मसल EMG पोर्शन में कौन से मसल में fibrillation potential है. और ये EMG इसलिए भी जरूरी है to see the signs of renervation व polyphasics होंगे. लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है EMG करने की कि ये जो दूसरी पैथोलॉजीज है मसल की, मसलन मायोपैथी, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है. तो ये पोर्शन भी बड़ा जरूरी है और खुद पढ़ना शुरू करें रिपोर्ट को और उसको इंटरप्रेट करना शुरू करें. The early stage of nerve compression is associated with dynamic ischemic events और electrodiagnostic studies नॉर्मल हो सकती हैं जैसे मैंने पहले कहा. As the compression progresses, demyelinization will occur and conduction velocity will slow और उससे वो latency भी. अब ये समझना जरूरी है कि carpal tunnel situation में तो latency is more sensitive और cubital tunnel situation में generally we more rely on the velocity. Velocity less than 50 meter per second, that is an indication across the elbow, that is indication of possibility of cubital tunnel syndrome. So each situation में by experience we have learned कि कौन से जो parameters हैं वो ज्यादा important है. अब axonal loss जो है that does not usually take place until late in the course of compressive neuropathy. With carpal tunnel syndrome, nerve conduction study latency may be prolonged, but EMG is generally normal until quite late. अब आ जाए specific compressive neuropathies around elbow. अब situation ये है कि 3 nerves हैं जो which cross the elbow. इसको इस तरह conceive करें कि 3 दुशीज़ाएं हैं जिन्हें बड़े खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है. उधर कोई टनल भी है, किसी ब्रिज से गुजरना पड़ता है. There are strange partners and all these 3 जो nerves हैं, दुशीज़ाएं हैं, they can be screwed anytime.
Most common is ulnar nerve. At the elbow, that is the commonest compressive neuropathy. पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? अब अल्नर नर्व पे कंप्रेशन होगा तो यू कैन डिड्यूस के पैरास्थीसिया और पेन होगी स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर में। और जैसे जैसे मसला बढ़ेगा तो इंट्रिंसिक वीकनेस हो जाएगी। इंट्रिंसिक वीकनेस कैसे रिप्रेजेंट करेगी? जैसे कोई भी इंट्रिंसिक वीकनेस रिप्रेजेंट करती है, देयर माइट बी क्लाइंग, देयर माइट बी एट्रोफी, रोमन साइन पॉजिटिव होगा और बहुत से अल्नर साइन पॉजिटिव होंगे। और ऐसे जैसे मसला बढ़ेगा फिर यू कैन सी विजिबली मसल एट्रोफी। तो ये तो एक जनरल उसकी क्लिनिकल पिक्चर हो। अब जैसे मैंने कहा कि हर नर्व के कुछ प्रोवोकेटिव टेस्ट होंगे और वो इस चीज पे बेस होंगे, या आपने प्रेशर बढ़ाना है वहां पे या उसको स्ट्रेच करना है। तो यहाँ एक तो टिनल साइन है ओवर द क्यूबिटल टनल। अब क्यूबिटल टनल है बिटवीन मीडियल एपिकैंडल और ओलेक्रन, वहां पे आपने टैप करना है। लेकिन मसला टिनल साइन का ये है कि ये इट इज ओवरली सेंसिटिव और कई दफा नॉर्मली भी पॉजिटिव होता है और अक्सर बायलैटरली पॉजिटिव होता है। जो अच्छा टेस्ट है वो है नर्व को स्ट्रेच करें बाय एक्यूटली फ्लेक्सिंग द एल्बो और जस्ट प्रॉक्सिमल और ओवर द क्यूबिटल टनल थोड़ा सा प्रेशर दें और उससे अगर सिम्टम रिक्रिएट होते हैं तो दैट इज एल्बो पॉजिटिव एल्बो फ्लेक्शन टेस्ट। अब आपने क्लिनिकल डायग्नोसिस कर ली है, उस पर अब आप जब ईएमजी नर्व कंडक्शन स्टडीज करवाएंगे तो जैसे पहले मैंने थोड़ी सी डिटेल में इसलिए बताया कि आप इसको अब आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन एनी कंप्रेसिव न्यूरोपैथी कि देयर वुड बी रिड्यूस्ड कंडक्शन वेलोसिटी। इफ इट इज लेस देन 50 मीटर पर सेकंड दैट्स इंडिकेटिव ऑफ प्रॉब्लम एट द एल्बो लेवल। और फिर आपने देखने हैं साइन ऑफ डीनर्वेशन ऑन ईएमजी। लेकिन टेस्ट कुछ और वजह से भी इसमें स्पेशली क्यूबिटल टनल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देयर आर अदर साइंस प्लेसेस ऑफ कंप्रेशन। जैसे अभी कर्नल साहब ने समझाया कि थोरैसिक आउटलेट में भी बिल्कुल सिम्टम वही होंगे वो, और सर्वाइकल न्यूरोपैथी C8 T1 में बिल्कुल वैसे सिम्टम हो सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि ये एक साइट है विच कैन मिमिक जो ज्यादा सीरियस डायग्नोसिस है, मसलन मोटर न्यूरॉन डिजीज है, ज्ञान-बारे सिंड्रोम है, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हैं, उनमें सिम्टम्स कैन मिमिक क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। उनको रूल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग डायग्नोसिस ऑफ क्यूबिटल टनल। अब इसकी थोड़ी सी एनाटमी समझनी जरूरी है क्योंकि दैट विल गिव यू एन आइडिया आपके क्या क्या चीजें नर्व को इस लेवल पे तंग कर सकती हैं। अब अल्नर नर्व एंटीरियर कंपार्टमेंट में है, उसने इंटरमस्कुलर सेप्टम से गुजर के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाना है यहाँ पे, तो वहां पे कंप्रेस हो सकती है। फिर देयर इज आर्केड ऑफ स्ट्रदर। आपको जरा थिंकिंग या अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है, आर्केड और चीज है, लिगामेंट ऑफ स्ट्रदर और चीज है। आर्केड तो फाइब्रस कुछ फाइबर हैं जो इंटरमस्कुलर सेप्टम और ट्राइसेप्स के दरमियान है, उसके नर्व उसके नीचे से गुजरती है। सो दैट कैन बी अनदर सोर्स ऑफ कंप्रेशन यहाँ पे आर्केड स्ट्रदर। एज इट goes into the cubital tunnel proper, यहाँ this is medial epicondyle, this is olecranon, so this is a kind of narrow space, ऊपर उसके टाइट फाइबर्स हैं और उसको कहते हैं लिगामेंट ऑफ ऑस्बॉर्न। दैट कैन बी अनदर सोर्स। और फिर जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल इटसेल्फ जिसके दो हेड हैं और उसके मसल के अंदर इवन मैनी सेंटीमीटर डिस्टली देयर कैन बी फाइब्रस आर्केड्स जो नर्व को तंग कर सकते हैं। सो इट कैन बी, दैट्स व्हाई जब हमने इसको डीकम्प्रेस करना है तो थारो काम करना है। यहाँ इंटरमस्कुलर सेप्टम से लेकर इंक्लूडिंग दिस आर्केड ऑफ स्ट्रदर्स, फिर यहाँ क्यूबिटल टनल इटसेल्फ, फिर ये ऑस्बॉर्न लिगामेंट, इसको रिलीज करना है। मसल के अंदर भी आपने झांकना है कि वहाँ कोई फाइब्रस टिश्यू तो नहीं जो नर्व को तंग कर रही है। तो ये सारे आपने एनाटमी समझेंगे
और इसीलिए जनरली आपको इंसियन क्वाइट जनरस देना पड़ता है, कम से कम कोई 10-15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ताकि आप सारी नर्व को डीकम्प्रेस और फ्री कर सकें। छोटे इंसियन जनरली विल लीव सम पैथोलॉजी बिहाइंड। अब नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट क्या है? और नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इज क्वाइट सक्सेसफुल इन मैनी केसेस। अगर आप क्योंकि ये नर्व इस्कीमिया हो रहा है बाय फ्लेक्सिंग द एल्बो एंड कीपिंग इट देयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कुछ प्रोफेशन के साथ रिलेटेड होगा। अगर आप डेस्क पे काम करते हैं तो डेस्क का प्रेशर है हर वक्त, वो पोजीशन अवॉइड करें जिसमें ये सिम्टम पैदा होते हैं। इस किस्म का एक प्रोटेक्टिव गियर कोई सप्लेंट बना दे जिसमें फोम वगैरह हो जो डायरेक्ट प्रेशर को अवॉइड कर सके। अगर इस तरह की बनी बनाई नहीं मिलती तो आप खुद बना सकते हैं ताकि उस पर डायरेक्ट प्रेशर, उसकी मूवमेंट किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करें कि एक्यूट फ्लेक्शन ना हो। इस किस्म की सप्लेंट बन सकती है। आप कोई और सप्लेंट भी सोच सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन प्रिंसिपल कि आपने प्रेशर अवॉइड करना है और एक्यूट फ्लेक्शन अवॉइड करनी है, और लेकिन 3-4 महीने लगेंगे उसको ठीक होने में, 2-4 हफ्ते में ठीक नहीं होगा। तो ये समझना जरूरी है। अब अगर ये सारा सक्सेसफुल नहीं होता और सिम्टम्स कंटिन्यू हैं, या टू स्टार्ट विद देयर इज मसल एट्रोफी या मोटर साइंस हैं, तो फिर तो जल्दी आपको नर्व को डीकम्प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है, नॉट जस्ट डीकम्प्रेशन, क्योंकि नर्व इज इन द हार्म्स वे बाय इट्स एनाटॉमिकल सिचुएशन। आपने इसको वहां से निकालना है। आपने इसको जो एक बुरी सिचुएशन, बुरे माहौल से निकाल के एक अच्छे माहौल में लाना है कि ताकि हर वक्त वो एल्बो फ्लेक्शन के साथ जो कंप्रेशन होता है, जो इस्कीमिया होता है, वो ना हो। अब ये डिफरेंट सर्जिकल ऑप्शन है आपके पास। इन साइटो रिलीज कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी जो लॉजिकल लिमिटेशन है वो खुद ही समझ सकते हैं कि रिलीज तो कर दिया लेकिन वो अपनी पोजीशन में रही और ईच एल्बो फ्लेक्शन के साथ वो फिर भी कंप्रेस होगी और उसमें इस्कीमिया होगा। सो इसके बहुत कम लोग हैं जो रियली बिलीव करते हैं कि दिस इज ए गुड सोल्यूशन, लेकिन कुछ लोग जरूर करते हैं। फायदा वो क्या गिनवाते हैं कि जी वो आपकी डिसेक्शन बड़ी मिनिमल है, स्कारिंग बहुत कम होगी, अगर रिकरेंट होगा तो वहां पर स्कारिंग बहुत कम होगी। लेकिन आई डोंट थिंक द लॉजिक इज वेरी जस्टिफाइड। जो रियल सोल्यूशन है वो है उसका रिलीज ऑफ द नर्व एंड एंटीरियर ट्रांसपोजिशन। अब इसमें जो कंट्रोवर्सी है कि जहां नई सिचुएशन में आपने कहाँ रखनी है, सबक्यूटेनियस रखनी है, इसको मसल के अंदर रखना है कि मसल के नीचे रखना है, ये कंट्रोवर्सी है। और उसमें जनरली तो इतनी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जितना लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस या उनकी लॉजिक है। इसमें मेरी जो प्रेफरेंस हमेशा रही है कि अगर 2-3 कंपीटिंग सोल्यूशन है, सिंपलर इज द बेटर। So most of the time for primary, I will do the release the nerve, transpose the nerve anteriorly and subcutaneous plane. Only I reserve submuscular or intramuscular for recurrent situation or reduce. तो दो और solution भी हैं, medial epicondylectomy, which I don't like to do it, I have never done it, and endoscopic. अब एंडोस्कोपिक आप जो लोग करते हैं वो इसके बड़े फेवर में है। मेरा ख्याल है कि आप काम का एक सिंपल सिचुएशन को मुश्किल बना रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एंडोस्कोपिक कार्पल टनल रिलीज है, 5 मिनट के ऑपरेशन को आप घंटे का ऑपरेशन बना देते हैं। और फिर जो रिस्क है उसमें नर्व इंजरी का, आपने हमेशा सोचना कि इज दैट वर्थ टेक। ये कॉन्सेप्ट नर्व को आपने थॉरोली रिलीज करना है, राइट। इसलिए लंबे इंसियन की जरूरत है, ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर ऊपर तक जाना है, आर्केडा स्ट्रदर तक, और मे बी जहां वो इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स कर रही है। और जो इम्पोर्टेंट चीज है, नहीं मेरे ख्याल में वो ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि बजाय कि कहाँ रखना है, सबक्यूटेनियस रखना है, मसल के नीचे रखना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसकी वास्कुलरिटी को मेंटेन रखे, इसके साथ जो वेसल है उनको नर्व के साथ ही रहने दे, इसको डिस्कलनाइट टोटली ये वेस्कुलर न करें। मेरा ख्याल वो ज्यादा असल में इम्पोर्टेंट चीज है। और वो जरा सब्र चाहिए और आराम से आपने डिसेक्शन करनी है, छोटे छोटे वेसल को इसके साथ ही रखें। ये जो यहाँ पे आके ब्रांचेस होंगी जो फ्लेक्सर कार्पेल नर्व्स में जाएंगे, उनको जरा फ्री करें ताकि ये बगैर किकिंग और बगैर एक्यूट एंगल के मसल में दाखिल हो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब इसको रखने के लिए वहां, जस्ट सो दैट इट डजंट फॉल बैक,
मैं तो बड़ा सिंपल काम करता हूँ कि यहाँ सबक्यूटेनियस जो फैट है उसमें स्टिच लगा के तो यहाँ फेशिया के साथ 2-3 स्टिच लगा देता हूँ ताकि एक्यूट फेज में वो उसको पीछे जाने से रोके। लोग फेशियल स्लिंग भी बनाते हैं, यहाँ से फेशिया का एक स्लिंग बनाया और उसके साथ स्टिच कर दिया। तो मेरे ख्याल में तो सिंपलर थिंग इज बेटर। इन नर्व्स को जरा आपने फ्री करना होता है ताकि नर्व बिल्कुल ऊपर से स्मूथली मसल में दाखिल हो, कोई नई किंकिंग पैदा ना करें आप। ये दूसरी ऑप्शन है कि सारे के सारे फ्लेक्सर प्रोनेटर मसल को उठा लें, नर्व को उसके नीचे शिफ्ट करें और मसल को वापस सीटर कर दें। ऑब्वियसली बिगर ऑपरेशन है, फिर फ्लेक्सर प्रोनेटर वीकनेस भी होगी, ज्यादा स्कारिंग होगी और फिर मसल कंट्रैक्शन के साथ इस पे फिर प्रेशर डाल सकता है। और ये है ट्रांसमस्कुलर जो सूजन मैकनन जो फेवर करती है कि मसल में थोड़ी सी ग्रुप बनाते हैं, उसी के फेशिया से थोड़ा सा ये स्लिंग बना के तो मसल नर्व को वहां पे, वो उनका कहना है कि मसल जो टिश्यू इटसेल्फ इज दैट्स मोर फेवरेबल एरिया वहां कुछ और सबक्यूटेनियस से वो बेहतर है। लेकिन मेरे पर्सनल प्रेफरेंस तो हमेशा ही सबक्यूटेनियस रही है। आई विल प्रिजर्व दीज प्रोसीजर फॉर रीडूज। मीडियल एपिकैंडोलेक्टमी की लॉजिक ये है कि ये मीडियल एपिकैंडल का जब आप पोर्शन निकाल देंगे तो नर्व वुड बी मोर फ्री टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन उसमें जो रिस्क है कि साथ ही वो मीडियल अल्नर कोलैटरल लिगामेंट पड़ा हुआ है, अगर वो इंजर हो गया तो यू कैन कॉज मीडियल एल्बो इंस्टेबिलिटी। और मैं जनरली बोनी प्रोसीजर इस सिचुएशन में अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन दैट प्रोसीजर इज देयर इन द लिटरेचर और उसके कुछ प्रोपोनेंट्स हैं। अच्छा जी, अब ये तो हो गया अल्नर नर्व का। अब चलिए मीडियन नर्व की तरफ। मीडियन नर्व का आज आपने काफी सुन लिया कार्पल टनल में, दैट इज द मोस्ट कॉमन। लेकिन ऊपर जब मीडियन की एनाटमी देखेंगे तो कई दफा ये सिचुएशन होगी कि पेशेंट प्रेजेंट्स विद मीडियन नर्व सिम्टम और जब ईएमजी आप करवाते हैं वो नॉर्मल है। उसमें खास चीज जो पूछने की है कि वह थिनर एरिया और पाम में भी पैरासीजिया या नमनेस है कि नहीं, क्योंकि कार्पल टनल में जो पामर कुटेनियस ब्रांच है वो तो स्पेयर हो जाती है ना, तो वहाँ आमतौर पर पैरासीजिया नहीं होना चाहिए। अब जब एनाटमी देखें तो मीडियन नर्व, जैसे मैंने कहा कि ये जो चीजें हैं नहीं दुशीज़ाएं हैं, ये खतरनाक रास्ते से गुजर रही हैं। दे आर वल्नरेबल एंड दे कैन बी स्क्रूड बाय सो मेनी थिंग्स एंड एट सो मेनी प्लेसेस। अब मीडियन नर्व का कोर्स देखें, ये है लिगामेंट ऑफ स्ट्रदल्स। अक्सर यहाँ एक स्पाइक होगा स्पर और उसके और मीडियल एपिकंडाल के देयर लिगामेंट, दिस इज कॉल्ड लिगामेंट ऑफ स्ट्रदल। आर्केड पीछे है, यहाँ मीडियन वो आर्केड जो है वो तो अल्नर नर्व में इन्वॉल्व होगा, ये लिगामेंट मीडियन नर्व में, मीडियन नर्व कैन बी कंप्रेस्ड देयर। अब थोड़ा सा आगे चलें, ये लेसर्टस फाइब्रोसिस है, इसके नीचे भी मीडियन, इससे नीचे मीडियन नर्व में गुजरना है, वहां कंप्रेस हो सकती है। इससे आगे चलें तो मीडियन नर्व ने जाना है बिटवीन द टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरीज, और उसमें अगर कुछ फाइब्रस टिश्यू है दे कैन बी कंप्रेस्ड देयर। और उसके साथ ही नीचे उसके पड़ा है जो प्रॉक्सिमल आर्च है एफडीएस की। सो देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर नर्व कैन बी कंप्रेस्ड। अब मसला ये है कि ये है क्लिनिकल डायग्नोसिस, मीडियन नर्व के सिम्टम्स हैं, ईएमजी नर्व कंडक्शन वुड बी जनरली नॉर्मल, बल्कि जब आप एक्सप्लोर कर रहे हैं फिर भी ये समटाइम्स यू आर नेवर श्योर कि डिड आई रियली सॉ ए साइन ऑफ कंप्रेशन। और दूसरी एक बात जो ज्यादा है कि अगर आप लेट्स से वन केस में बी इन 5 ईयर प्रोनेटर सिंड्रोम का कर रहे हैं, अगर इससे ज्यादा कर रहे हैं तो यू आर मेकिंग ओवर डायग्नोसिस। दिस इज ए रेयर कंडीशन और वन शुड बी ऑलवेज स्केप्टिकल ऑफ द डायग्नोसिस। और चूंकि जो वेग डायग्नोसिस है, वेग ट्रीटमेंट है, आपको जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो ये सारे के सारे ही फैक्टर आपको देखने पड़ेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ तक। और फिर भी एट द एंड यू माइट थिंक कि मुझे तो कुछ चीज खास नजर नहीं आई। लेकिन बहरहाल दिस प्रोनेटर सिंड्रोम जो है दैट्स एक एंटिटी है और रियलिटी है, लेकिन रेयर डायग्नोसिस है। So pronator syndrome defined as compression of the median nerve in the forearm that results in isolated sensory alteration
in the median nerve distribution in the digits and thenar epitheliums. As opposed to that, जो anterior intraosseous syndrome है, वो है particularly anterior intraosseous nerve का, और motor weakness होगी flexor pollicis longus और flexor digitorum profundus में जो median innervated है. और जनरली तो वो होता है वायरल सिचुएशन और खुद रिकवर कर जाता है. वेरी रेयरली यू विल हैव टू एड्रेस एंटीरियर इंट्रासिस सिंड्रोम सर्जिकल. एक चीज ज़हन में रहनी चाहिए, वो है पर्सनल टर्नर मोनोन्यूराइटिस. वो उसकी भी इटियोलॉजी का नहीं पता, लेकिन लोग समझते हैं कि वो भी शायद वायरल है. उसमें कोई एक नर्व एंटीरियर इंट्रासिस बड़ा कॉमन इन्वॉल्व होती है, लेकिन दूसरी नर्व भी इन्वॉल्व हो जाती हैं. मसलन एक्सेसरी है, मसलन लॉन्ग थोरेसिक है, तो दैट इज अ सेपरेट एंटिटी. अब जो ट्रू एंटीरियर इंट्रासिस है, द वीकनेस और लॉस ऑफ फंक्शन इज मोटर और स्पॉन्टेनियसली होता है. और पर्सन टर्नर सिंड्रोम जो है, उसमें पेन होती है कई हफ्ते पहले. ये आपने करना है. अगर पोर्नेटर सिंड्रोम आपने वाकई डायग्नोसिस कर ली है, वो कंजर्वेटिवली ठीक भी नहीं होता, तो आपने लॉन्ग इंसियन से सारी की सारी. अब यहाँ पे जस्ट वन स्टेप आप एनाटमी से देख लें, उसी से आप अखज़ कर सकते हैं कि आपके प्रोवोकेटिव टेस्ट क्या होंगे. अगर तो लेसर्टस फाइब्रोसिस है, तो आप सुपिनेशन करेंगे, फोर्स सुपिनेशन अगेंस्ट रेजिस्टेंस और फ्लेक्शन. बेसिकली बाइसेप्स को टाइट कर रहे हैं, उससे लेसर्टस फाइब्रोसिस टाइट होगी. So that will reproduce the system. अगर प्रोनेटर TDs इन्वॉल्व है, तो आपने फोर्स प्रोनेशन करनी है अगेंस्ट रेजिस्टेंस, तो दैट माइट रिक्रिएट द सिम्टम. अगर फ्लेक्सर डिटरम सबलिमस इन्वॉल्व है, तो आपने मिडल फिंगर को अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्लेक्स करना है और रिस्ट को फ्लेक्स करना है. तो जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द एनाटमी और अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल, आप जो प्रोवोकेटिव टेस्ट हैं वो खुद भी सोच सकते हैं. तो अब जब आपने ऑपरेशन करना है, तो सारे के सारे ही इश्यूज को आप एड्रेस करना है. ऊपर लिगामेंटल स्ट्रक्चर को देखना है, लेसर्टस फाइब्रोसिस को आपने डिवाइड करना है, प्रोनेटर टीरीज के हेड को उनके दरमियान आपने देखना है, वहां को कंप्रेशन नहीं है. और प्रॉक्सिमल जो एंड है उसका फ्लेक्सर डिटरम सबलिमस का, उसको रिलीज करना है. तो सारे इश्यूज को आपने एड्रेस करना है. अच्छा, ये अब आ जाइए रेडियल नर्व. अब रेडियल नर्व ऊपर तो आप यू आर ऑल फेमिलियर इस कोर्स, और इट्स रेडियल नर्व पाल्सी इज अ कॉमन इशू. At the elbow level, that is lying between biceps and brachialis on one side and brachioradialis and wrist extensor on the other side. यहाँ पे वो डिवाइड हो जाएगी. जो सेंसरी पोर्शन है वो आएगा ब्रेकियोरेडियलिस के नीचे बिल्कुल उसकी अंडर सरफेस के साथ साथ, until about 8 or 10 centimeter proximal to the wrist. वो इसकी एक्सटेंसर साइड की तरफ से इससे बाहर बरामद हो जाएगी. और जो मोटर ब्रांच है वो आफ्टर सप्लाइंग टू द रिस्ट एक्सटेंसर, दैट विल एंटर द आर्केड ऑफ रोश. वो जो एक फाइब्रस आर्केड है सुपिनेटर का, तो उसके दो हेड्स के दरमियान में से गुजरेगी, और जैसे ही वो बाहर उससे निकलेगी, इट विल डिवाइड इनटू मैनी ब्रांचेस. और अब देख सकते हैं कि अब इसकी सेंसरी ब्रांच भी इन्वॉल्व हो सकती है, उसको एड्रेस करते हैं. यहाँ पे एक डायग्नोसिस है जो बड़ी कंट्रोवर्शियल है, जिसको कहते हैं रेडियल टनल सिंड्रोम. उसकी तरफ अभी आते हैं. या प्योर पोस्टीरियर इंट्रासियस नर्व एट द आर्केड ऑफ फ्रोश या अंडर द सुपिनेटर, इट कैन गेट इन्वॉल्व्ड. अब सबसे पहले आ जाए इसका सेंसरी पोर्शन, जिसको कहते हैं वाटरबर्ग सिंड्रोम. अब नर्व है ये ब्रेकियोरेडियलिस है, 8-10 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल आ जाए रेडियल स्टाइलॉइड से. ये देखें, ये आपका ब्रेकियोरेडियलिस है, ये एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस है. यहाँ नर्व ने इधर से बरामद होना है, इसके पहले इससे नीचे है. अब यहाँ पे वो कंप्रेस हो सकती है, क्योंकि एक तो मसल टेंडन में बदल गया, फिर दूसरे दो मसल आ गए. जब वो मूव करेंगे तो नर्व कैन बी कंप्रेस हियर. और पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा कि इधर उसको पैरासीजिया है ओवर द थंब एंड, और यहाँ पे उसका टेनल साइन पॉजिटिव होगा. तो इसको आप खोल के रिलीज कर दें, और थोड़ा सा टेंडन अगर काटना है तो काट दें. एक लॉजिकल सोल्यूशन है.
एंड दिस इज व्हाट वी डू। इसको इंसियन बना के इसको रिलीज करें और ब्रेकियोरेडियलिस का थोड़ा सा अगर टेंडन काटना भी पड़ता है तो काट दें। अब जो रेडियल टनल सिंड्रोम है वो बड़ी इंटरेस्टिंग डायग्नोसिस है, जो उसका तल्लक फेथ के साथ है। जो उसके मुनकर है वो कहते हैं कि ऐसे ही फ्रॉड है, कोई ऐसी चीज नहीं। जो जिन्होंने उस पर ईमान लाया हुआ है उनके लिए जो भी लेटरल एपिकैंडिलाइटिस है वो भी एवरी लेटरल एपिकैंडिलाइटिस इज द रेडियल टनल सिंड्रोम। सो इट्स अ कंट्रोवर्शियल डायग्नोसिस। अब वो टनल है क्या कि उसके एक तरफ है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस और ब्रेविस, दूसरी तरफ बाइसेप्स और ब्रेकियालिस का है। उसके ऊपर ओवरलाइंग इज द ब्रेकियोरेडियलिस और पोस्टीरियरली है योर रेडियो योर कैपिटलो रेडियल हेड जॉइंट। और उसके ऊपर से लेट्स से कि हाँ ये उसकी एनाटमी है। वो कहते हैं कि इसकी एक वेसल की एक ब्रांच है जिसे लीश ऑफ हेनरी कहते हैं, ये रिकरेंट रेडियल नर्व का वेसल, उससे ब्रांच वो उसको कंप्रेस करती है एंड पीपल ट्राई टू डीकंप्रेस दैट, अगर वो बिलीवर हैं कि दैट इज अ रियल डायग्नोसिस। तो जनरली तो दैट्स इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ लैटरल एपिकैंडिलाइटिस, और दोनों दे कैन कोएग्जिस्ट। पहले तो lateral epicondylitis को ही one should resist all the time to do surgical treatment, क्योंकि it is self-limiting thing और generally वक्त के साथ बेहतर हो जाती है। तो कभी कभी अगर आप ये डायग्नोस करें तो आपको वहाँ खोल के देखना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई वेसल है तो उसको आपने रिमूव करना है और उसको नर्व को फिर ट्रेस कर लें आर्केड ऑफ रोच तक। A posterior intracranial nerve compression that can happen by trauma, single episode or multiple episode, or under the supinator, especially जहाँ वो enter होती है जिसे arcade of Roche कहते हैं, and that can result in muscular weakness or paralysis of posterior intracranial nerve. The onset of symptom may occur after trauma or an insidious onset. और करना क्या है, अगर आपने ये डायग्नोसिस की है तो इसको रिलीज करें। इसको रिलीज करने के लिए अगेन देयर आर मेनी डिफरेंट अप्रोचेस, बट आई थिंक वन शुड मेक ए एक्सटेंसल अप्रोच। और डिफरेंट विंडो पे आप ब्रेकियोरेडियलिस के दूसरी साइड से भी उसको एंट्री पे भी देख सकते हैं, फिर ये विंडो इस्तेमाल कर लें बिटवीन ब्रेकियोरेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, या आप ये सारे मसल्स को उधर रिट्रैक्ट कर लें और सुपीरियर मसल को उसका सुपरफिशियल हेड इंसाइज करके सारी की सारी नर्व देख सकते हैं। यहाँ स्पेस ऑक्युपाइंग भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, मसल को गैंग्लियन हो सकता है, फिर रूमेटॉइड में साइनोवाइटिस से ये नर्व यहाँ कंप्रेस हो सकती है। तो दिस इज अबाउट ऑल थ्री नर्व्स अराउंड द एल्बो। कुछ मैंने आपको उसकी बेसिक फिजियोलॉजी समझाई कि ताकि आप उस नॉलेज को किसी भी कंप्रेसिव न्यूरोपैथी सिचुएशन में इस्तेमाल कर लें, और कुछ बेसिक ईएमजी नर्व कंडक्शन स्टडीज ताकि आपको पता हो कि आप व्हाट आर यू रियली लुकिंग एट, और किस ये जो पैरामीटर हैं ये हमें बता क्या रहे हैं। और हर जो न्यूरोपैथी है उसके प्रोवोकेटिव टेस्ट है, उसकी मोटर एग्जामिनेशन है, उसका सेंसरी एग्जामिनेशन है, और जो भी ट्रीटमेंट का तो एक ही प्रिंसिपल है कि रिमूव द कॉज। वो जो भी आप समझते हैं कि ये चीज कंप्रेस कर रही है या स्ट्रेच कर रही है, वो कॉज रिमूव करने की कोशिश करें। तो दिस इज आई थिंक द बेसिक थिंग्स अबाउट द कंप्रेशन न्यूरोपैथी। अब ये जो तस्वीर है बड़ी मशहूर है माइकल एंजेलो की, बर्थ ऑफ एडम, उस चीज पे बेस है जो बाइबल में है कि गॉड क्रिएट मैन इन हिज ओन इमेज। ये जो बूढ़ा आदमी है वो उसने गॉड के तौर पर डिपिक्ट किया है, और आदम जो है वो अभी इन्फेंसी में है, इसलिए उसका हाथ देखें तो वो रेडियल नर्व पॉलिसी पोजीशन में है, विच इज अ साइन ऑफ वीकनेस। और ये अगर इंटीरियर इंट्रासिस नर्व इन्वॉल्व होगी तो गॉड वुड नॉट बी एबल टू डू दिस। थैंक यू। Thank you, sir. Very elaborative for understanding. So we can take few questions here. कोई सवाल जवाब अगर कर्नल साहब बैठे हैं या अवेलेबल है अभी? खालिद साहब
खालिद साहब नजर नहीं आ रहे। अच्छा, क्योंकि वो थोरेसिक आउटलेट में जो मेरा फेवरेट प्रोसीजर हमेशा रहा है और मैं समझता हूँ कि दैट्स मोर comprehensive solution addressing all the possible causes, वो है फर्स्ट रिब रिसेक्शन थ्रू द ट्रांसएक्सिलरी अप्रोच। जी खालिद साहब मौजूद हैं जी, अनम्यूट हो गए। बड़ी मुश्किल लगती है देखने में, वो इट्स अ ब्लडलेस अप्रोच और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, लेकिन आई ओनली थिंक वन हैज टू सी इट समबडी डूइंग इट। जी सर, बिल्कुल मैं टोटली एग्री करता हूँ। वो जो ट्रांस एक्सिलरी अप्रोच है उसका जो एडवांटेज है वो मेनली ये है कि जी आपकी न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर जो हैं वो काफ़ी सेव हो जाती हैं एंड you can remove the maximum rib as possible, जितनी आप कर सकते हैं बड़ी इजीली वैसे हो जाता है। लेकिन वो मेरे ख्याल देखना चाहिए किसी को करते हुए पहले, फर्स्ट टाइम अपने तौर पर अटेम्प्ट ना करे, बेहतर तो ज्यादा सेफ है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम मेरे ख्याल सीखे बगैर किसी को नहीं करना चाहिए। उसमें कॉन्सेप्ट ये है ना कि आउटलेट सिंड्रोम क्या है कि दरवाजा तंग है, आपने वो जरा दरवाजा खुला कर देना है। जी सर। तो सिमिलरली आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ स्केलेनेक्टमीज एज वेल, और स्केलेनेक्टमी के भी बहुत रीजनेबल रिजल्ट हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसका जो सबसे बड़ा आथर है ना वो है एट्सोय। एट्सोय टर्किश है, असल नाम मेरा अल्तूसी है उसका। ये जो जिसका क्लाइनेट एट्सोय फ्लैप भी है फिंगर टिप के लिए, उसका जो सीरीज है वो तो शायद हंड्रेड्स में है, और ये ही वाज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस ट्रांस एक्सिलरी अप्रोच और एक्सियन ऑफ द सेक्शन ऑफ द फर्स्ट रिब एंड द सेम अप्रोच से आपने सर्वाइकल रिब को भी निकाल दिया। तो फिर उसमें ये है कि जी अगर तो सर्वाइकल रिब डायग्नोज है और मौजूद है, हाँ जी, तो हाँ जी, फिर इन दैट केस द सुप्राक्लेविकुलर अप्रोच शुड बी द बेटर अप्रोच। हाँ जी, उसमें ये है कि स्केलेनेक्टमी अलोंग विद एक्सियन ऑफ द सर्वाइकल रिब, दैट विल बी द सॉल्यूशन इन दैट केस। ठीक है अरुण साहब, इजाजत। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सो